गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो ये डे 2 है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डेविल्स फिंगर। सो शी इज़ माई गाइड बेसिकली, जो आप कल से देख ही रहे हो। सो वी आर गोइंग टू डेविल्स फिंगर। सो आई विल टेक यू अलॉन्ग द जर्नी। लेट्स गो गाइस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बड़े enthusiastic हैं। We can see that उसके सेल्फीज खत्म ही नहीं हो रहे। So I will show you the day view of my hostel. बहुत अच्छी है जगह। It's really very nice. आ गई मेरी ट्रैवल गाइड। आजा बैठ जाओ। चलो जाएंगे। Hold you close, now my heart's wide open. When I'm with you suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Hi guys, तो we have reached the lower Agoda fort. तो मेरे पीछे है beach. To reach here we took around 20 minutes. So I'll just show you the view. It's very beautiful. Do you make it go away? So we're gonna go there. तो यहाँ पे स्टेप्स है। Hold you close, now my heart's wide open. When I'm with you suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it? It's a really good place for photos. So हम लोग वही कर रहे हैं, photos ले रहे हैं. So after taking photo, I'll let you know what we'll do next. Guys, अभी हमारा photo shoot is done. So if you want to see the photos, you guys have to follow me on my Insta page, either personal account or my YouTube वाला Insta account. So I'll just link that in my description box और यहीं पे भी लिख देती हूँ. Please go and follow my Instagram page. Okay? Please subscribe to our channel and also follow Instagram ID. क्या है आप तेरा Instagram ID? Vlogs of प्रतीक्षा है, वो YouTube का है, और डॉलिन है जो मेरी पर्सनल अकाउंट है। तो फॉलोअर्स बढ़ाओ यार, ज़्यादा बढ़ाओ प्लीज। सो गाइस, वी हैव डन अगोड़ा ट्रिप एंड हियर वी आर फॉर ब्रेकफास्ट। उडुपी होटल के जैसा वाइब्स है, तो लेट्स गो। तो ये अभी हमको बताएगी पाव भाजी का रिव्यू क्या है। वी आर वेटिंग। पाव इज गोवन पाव। ये गोवन पाव है। अच्छा ही होगा। नाइस। अच्छा, तो
नेक्स्ट देखेंगे छोले भटूरे का रिव्यू। गरम गरम भटूरे और ये बाउल में दिया है छोले। ओके भैया स्पून का है। ओके फाइन, तो मैं टेस्ट कर रही हूँ। बहुत क्रिस्प है। आउट ऑफ 10 7। कूल ब्रो। तेरा क्या है ये? छोले भटूरे विद पाव। Cool. So guys, I've got my breakfast, that is aloo paratha. So I'm gonna try it now. Not bad. Okay. How much you like to rate it? So it goes to 8. Out of 10. Yes. Okay. So we are here at Calangute beach. Night पे भी आए थे हम. So we have come here to click some photos in beach. Daytime में. So I'll show you the way. It's so hot over here, but photos so important here. So guys, what happened yesterday was at 1 o'clock we went to the main Calangute beach, and then at 1:30 we went to Baga beach, and by the time we came back to our hostel it was around 2:30 to 3. So I couldn't vlog yesterday. So अभी उसके लिए माफ़ी, तो I'm asking, please forgive me for that. And I'm shooting my vlog from morning. It's very like regular types में. So yeah, I'll show you the vibes. तो कितना लोगे? 100 कम तो हम तो 250 लेते हैं। आप वीडियो कर लो, वीडियो पे भी चेक करो मेरा। अरे 250 नहीं है। So this is what the trend is going on. जो गोवा बीच पे आते हैं, they'll make the braid of their hair. So हम उसके लिए आए हैं. We are excited. I'm excited. Yes, obviously we'll be. So we'll wait for that. So guys, मैं भी बनवा रही हूँ ये, और कलर जो मैंने चूज़ किया है वो मैरून और पर्पल. So the place where we stayed yesterday night, वहाँ पे तो लोग हमको बोले थे कैलंगेट में तो ये नहीं करते हैं. So we thought हमको फिर अंजुना बीच जाना पड़ता है ये करवाने को, but still we got to know यहाँ पे आने के बाद that even in Calangute beach they do this. So you guys also can come to Calangute beach for this. So there's no need to go to Anjuna for making this. So yeah, guys, we have come back to our hostel room, and we are going to check out now and leaving for Panjim. What I thought is I'll show you guys the day view of a hostel. So in my first vlog of Goa trip, I have shown you the night vibe of this hostel. So now I'll be showing you the day vibes of the hostel. So yeah.
Calangute to Panjim, and we are here at one restaurant called as Workshop. This restaurant is very famous over here, जो beach highway के बाजू में ही है. So I will show you the ambience of this restaurant. और यहाँ का फूड भी अच्छा रहता है बोल रहे हैं. And we have ordered kingfish thali, and I'm very excited to eat thali. So I've met the manager of this restaurant. So what's your name? My name is Robin. Okay, he is Robin. Say hi to my subscribers. So कब से चल रहा है ये restaurant? Restaurant we opened like on October 15th, Okay. the day of the year. Last year. Yeah, no, this year, 2021. 21 Dasera, yeah. Okay. So ये अभी recent है और उसका फेमस भी है तो ये रेस्टोरेंट, इसलिए हम बेलगाम से आए हैं आपके रेस्टोरेंट को. तो या थैंक यू सो मच. So you should come. You come here. You should try a thalis. Yeah. Everyone I am telling everyone is like you will most enjoy. You will not be dissatisfied. Thank you. थैंक यू. सो जैसे मैंने बोला यहाँ के थाली तो फेमस ही है, तो हम लोग भी थाली ऑर्डर किया है. तो गाइस हमने ऑर्डर किया है स्क्विड चिली एंड दिस इज मंकी बिजनेस. तो मैं पहले ये टेस्ट करूँगी. दिस इज काइंड ऑफ पाइनएप्पल टेस्ट का है, तो मैं ये ट्राई करूँगी. अच्छा है. Had our lunch at the workshop, and we are here at Panjim's most famous and most historically famous church. इसको माना जाता है कि ये बहुत पुरानी चर्च है और इसको आप तो देखे होंगे सभी बॉलीवुड मूवीज़ में, स्पेशली सिंघम. तो I'll just show this and मुझे फ़ोटो लेना है, and I'll show you the surroundings too. And this is church. This is the surroundings of the church. Cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Can you make it go away? Can you make it? नेक्स्ट हमारा स्टॉप होगा फोंटेनस. तो यहाँ के बाद हम लोग फोंटेनस जाएंगे. टेक यू गाइज विथ मी. तो फोंटेनस का वाइब्स, इट्स लाइक पौंडीचेरी के फ्रेंच कॉलोनी. तो उधर का तो मेरा ब्लॉग नहीं हुआ बिकॉज ऑफ रेन. तो एटलीस्ट आई विल बी डूइंग इट इन गोवा, जहाँ पे पौंडीचेरी का वाइब्स तो आएगा उधर. सो रोड क्रॉस कर रहे हैं मैं और मेरी फ्रेंड. बहुत धूप है यार. फेस की तो हालत पूछो ही मत. हमारे फेस को देखो ही मत. So guys, हम लोग अभी फोंटेनस की तरफ जा रहे हैं. So stay tuned. हम वहाँ जाके आपको वीडियोस वगैरह Stop the
fountainous and this gives Pondicherry का French colony vibes. तो पूरी वैसी ही है. You make it go away. You make it. At the end part of my video. तो ये था मेरी गोवा का सफ़र. I hope you guys liked it. I enjoyed it to the fullest because I was so excited for this trip कि मैं क्या ही बोलूँ. I am really happy with my vlogging. I hope you guys too will like my video. पूरी वीडियो देख लेना यार, 2 पार्ट है. So yes. So next time मैं आऊँगी साउथ गोवा. Until then, please keep supporting. Please do like, share and subscribe to my channel. Love you all. Bye. See you until next time. Every time, I'm a motherfucking friend. She been down since the jellies and the bo-bo. Now we stepping out the Jeep, got my nose. When we pull up to the scene, they be filled with jealousy. They go get in the key, she gon' bring the energy. I hit a phone with the T like, bitch, guess what? All the rich ass boys wanna fuck. Cause I just ass sitting up, you could look, don't touch. You know, bad with the bands every time we link up. That my best friend, she a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2, 3 drinks, now she twerking. She throw it out and come back in. That's my